Now students of 11th standard, let us see the last topic of this chapter, and after this video lecture you have to do the exercise work from your textbook. Last topic, most important, elastic collision in two dimensions. To explain about the elastic collision in two dimensions that is in XY plane. So as you can see in the diagram, there is a one body of mass m1 is moving with velocity of v1i along x direction, and it collides elastically with another body of mass m2 which is at rest. So after collision they are diverting from each other like this one. So one is moving with velocity of final velocity v1f, body of mass m1, and another body of mass m2 is moving in this direction with velocity of v2f. These two objects are making a definite angle with x-axis. This m1 is making an angle theta1 with x-axis, m2 is making an angle theta2 with x-axis. So this is a ball of mass or body of mass m2. So as I have written, suppose an object of mass m1 is moving with velocity v1i, collides elastically with stationary body of mass m2. After the collision, these objects moves in the directions making an angles theta1 and theta2 with x-axis with velocities v1f and v2f respectively. And as you know, for any kind of collisions, law of conservation of momentum holds, and for elastic collision, kinetic energy is conserved. So here from momentum conservation, you can write initial momentum equal to final momentum. Initially, one object is in motion, another is at rest. That's why we don't get the momentum of second body. The momentum of first body m1 v1i is equal to momentum, sum of the momentum of the two bodies, m1 vector v1f plus m2 vector v2f. v1f and vector v2f are in different directions, not in x direction, not in y direction. They are in xy plane. That's why you can resolve such vector v1f and v2f in its two components. अब देखिए v1f इस तरह से है, तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो along x direction you will get v1f cos theta1. यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन y एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे तो v1f sin theta1. सिमिलरली वेक्टर v2f इस डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस, तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वेक्टर v2f का कंपोनेंट इन x डायरेक्शन v2f cos theta, एंड ये y एक्सिस नेगेटिव y एक्सिस पे यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वेक्टर v2f का नेगेटिव कंपोनेंट माइनस v2f sin थीटा. तो नाउ ये वी आर टेकिंग, एंड यहाँ पे m1 v1i itself is in the x direction, it has only x coordinate, and x coordinate equal to v1i itself, while its y component will be 0 because it is not in xy plane, it is only in x direction. That's why only it has x component, y component of v1i is 0. So you can see that taking x components of momentum, तो इसका x components without arrow of velocity m1 v1i equal to m1 v1f cos theta1, इसका x component plus m2 v2f cos theta. It is equation number 1. Taking y components of momentum, इसका y component 0 because v1i itself is in x direction, that's why it has no y component. तो 0 equal to इसका y component आपको मिलेगा m1 v1f sin theta1, और इसका component मिलेगा आपको minus m2 v2f sin theta2, second equation. Then for elastic collision, as you know, kinetic energy is conserved, so we can write initial kinetic energy equal to final kinetic energy. So for elastic collision, kinetic energy is conserved. So initial kinetic energy, that means the kinetic energy of the two colliding bodies before collision. So 1/2 m1 v1 I square
no kinetic energy of the second body because its velocity is 0, equal to 1 half m1 v1 f square kinetic energy of the first body plus 1 half m2 v2 f square kinetic energy of second body. It is equation number 3. But actually here, when you are going to be solving such kind of the problems, then what you have to find? You have to determine either v1f or v2f or theta 1 or theta 2. That means out of these 4 physical quantity, at least 1 or 2 or 3 you have to determine, and sometimes 4 you have to determine. But which are the possible solutions? तो देखिए यहाँ पे mass of first body will be given to you, mass of second body will be given to you, initial velocity v1i is also be given to you. So usually m1, m2 and v1i are known quantities, but v1f, v2f, theta 1 and theta 2 are to be determined. Now from these two conserved quantities, one is momentum and another is kinetic energy, we are having 3 equations, equation 1, equation 2, equation 3. So what mathematics says? If you have 3 equations, then solving these 3 equations you can determine maximum 3 unknown quantities, while here we have to determine 4 unknown quantities. So here, but we have only 3 quantities like m1, m2, we have only 3 equations, so only 3 unknown quantities can be determined, but we have to determine 4. It means what? Out of these 4 unknown quantities, 1 must be given. So for solution of this problem, at least 1 out of 4 unknown quantities must be given to you, must be known to you. Now there is one example related with this theory, example number 6.13. So let I read it first. Example number 6.13. This diagram you have to consider. Instead of body mass m1 and m2, there are the 2 billiard balls. One is white, another is q white. First is q white and another is the target ball. So as it is written, consider the depicted diagram in figure 6.10. That means this diagram you have to consider to be between the 2 billiard balls of equal masses m1 and m2. The first ball is called the q white and the second ball is called the target. The billiard player wants to sink the target ball into a corner pocket which is at an angle of theta 2 equal to 37 degree. That means after colliding a one billiard ball with the another one, this another one is going in this direction, making an angle theta 2 equal to 37 degree into the pocket corner. That means into this sink. Assume that the collision is elastic and the friction and rotational motion are not the important one. Obtain the value of theta 1. So theta 1 kitna hoga, that you have to find. So what given here? Angle theta 2 is given 37 degree. Theta 1 you have to determine. Masses of 2 billiard balls are equal, m1 and m2. So for such elastic collision, as we know, momentum is conserved. So we can write m1 v1i equal to m1 vector v1i plus m2 vector v2i. But m1 and m2 are equal. That's why from this side common and it will be cancelled. So vector v1i equal to vector v1i plus vector v2i. Squaring on both the sides. So v1i square equal to in bracket vector v1f plus vector v2f whole square equal to v1f square plus v2f square plus twice vector v1f dot vector v2f. So this is a dot product between vector v1f and v2f. And as you know, vector a dot b equal to ab cos theta, where theta is the angle between the vector a and vector b. So this is vector v1f, this is vector v2f. दोनों के बीच का एंगल कितना है? theta 1 plus theta 2. So we can write the next step. v1f square plus v2f square plus twice v1f v2f cos theta 1 plus theta 2, जिसमें theta 2 की वैल्यू आपको 37 डिग्री दे रखी है. Therefore v1i square equal to v1f square plus v2f square plus twice v1f v2f cos theta 1
plus 37 degree. You can say this is equation number 1, which is obtained from the momentum conservation. Now we will obtain the second equation from kinetic energy conservation. Now for elastic collagen, kinetic energy also conserved. So we can write initial kinetic energy equal to final kinetic energy. That means 1 half m1 v1I square equal to 1 half m1 v1f square plus 1 half m2 v2f square. But m1 and m2 being equal, it will be cancelled from both the sides, as well as 1 half number will be cancelled. So you can write v1I square equal to v1f square plus v2f square. It is second equation. What was the first equation? v1I square equal to v1f square plus v2f square plus twice v1f v2f into cos theta 1 plus 37 degree. So comparing this equation 2 with that equation number 1, we get इसका ये की बात का remaining part will be equal to what? 0. That means twice v1f v2f cos theta 1 plus 37 degree equal to 0. मतलब ये तीनों का प्रोडक्ट 0 है, लेकिन ये तीनों में है क्या? 2 is not 0 number, v1f is not 0, v2f is not 0. It means what? This cos theta 1 plus 37 degree should be equal to 0. So because v1f is not 0, v2f is not 0, 2 is not 0, therefore cos theta 1 plus 37 degree equal to 0. But on the right side 0 के लिए क्या लिख सकते हैं आप? cos के फॉर्म में cos 90 degree. So cos theta 1 plus 37 degree equal to cos 90 degree. This implies these two angles will be equal. That means theta 1 plus 37 degree equal to what? 90 degree. So theta 1 will be equal to 90 minus 37. That will be 53 degree. So theta 1 will be equal to 53 degree. Now this example proves. क्या prove करता है? देखिए result is there. So this proves that when the two equal masses undergo an elastic collision, कोई भी दो body बराबर इक्वल मासेस की है, एंड इफ इट एक्सपीरियंसिंग द इलास्टिक कोलाजन विथ वन ऑफ देम एट रेस्ट, एक स्टेशनरी होना चाहिए, दूसरा मोशन में होना चाहिए, तो विथ वन ऑफ देम एट रेस्ट, देन व्हाट कैन हैपन आफ्टर कोलाजन? देन आफ्टर कोलाजन दे मूव एट राइट एंगल्स टू ईच अदर. तो दोनों की बॉडी आफ्टर कोलाजन ऐसे जाएगी, अगर एक इस तरह से जाएगी तो दूसरे इस तरह से, तो दोनों के बीच का एंगल कितना मिलेगा? टोटल 90 डिग्री मिलेगा. मतलब एक एंगल आप जानते हैं 30 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली दूसरा एंगल होगा 60 डिग्री. अगर एक एंगल 45 डिग्री है थीटा 1, तो थीटा 2 मिलेगा आपको 45 डिग्री. अगर आप थीटा 2 इक्वल टू 60 डिग्री जानते हैं तो थीटा 1 विल बी इक्वल टू 30 डिग्री मिलेगा. इट मींस व्हाट? दे मूव एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, एंड दिस कैन हैपेंस इन द गेम्स ऑफ, कौन सी गेम? एज यू नो, एज यू आर डेली प्लेइंग द गेम ऑफ कैरम, द गेम ऑफ मार्बल्स, गोटियां खेलना, उसमें भी ऐसा होता है, एट द गेम ऑफ बिलियर्ड्स. तो in this games of marbles, carom and billiard balls, this can happens which you can experience in your daily life. Then we see the next example. Example number 6.12. I read it again. Example number 6.12. It is on the page number 130. Slowing down of neutron. So actually this is an example related with the nuclear fission, and about the nuclear fission theory you will study in the 12th standard. So actually in this nuclear fission what happening? There is a one nucleus, target nucleus, like there is in nuclear fission uranium 92-235 is allowed to be under a fission by a neutron. So when a neutron is bombarded with uranium nucleus 92-235, then this uranium nucleus 92-235 splits into the two almost light nuclei along with certain neutrons are emitted. But in order to allow to induce the neutron bombarding on this uranium nucleus, they have to pass through a certain substance which is known as moderators, and this moderators is heavy water, or this moderator may be a carbon in the form of graphite. तो इससे रिलेटेड ये एग्जाम्पल है. In a nuclear reactor, a neutron of highly speed, typically 10⁻⁷ meter per second, must be slowed down
to 10⁻³ meter per second, so that it can have a high probability of interacting with isotope uranium-92-235 and causing it to fission, so that a neutron can lose most of its kinetic energy in an elastic collision with a light nuclei like deuterium or carbon, which has a mass of only few times the neutron mass. The material making up the light nuclei, usually heavy water D2O और ग्रेफाइट यानी कि कार्बन इज कॉल्ड ए मॉडरेटर। तो यहां पे मैंने जो आपको बताया, अब इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, तो इस एग्जांपल में आपको कैलकुलेट करना है मोस्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन व्हेन allowed to be incidenting on the uranium nucleus, then it loses its most of the kinetic energy with deuteron nucleus or with carbon nucleus। तो कितनी एनर्जी, अगर ड्यूटेरॉन न्यूक्लियस दैट मींस हैवी वाटर का मॉडरेटर है तो कितनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन की लॉस होती है। अगर कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट में मॉडरेटर है तो कितनी न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है, वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। एंड ये कोलाइजन कैसा है, इलास्टिक कोलाइजन, किसके साथ का, न्यूट्रॉन का विथ हैवी वाटर या तो कार्बन के साथ। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन का मास इज m1 and supposed to be moving initially with velocity of v1i. It collides with the atom of deuteron or it collides with the atom of carbon. So first we consider it collides with the atom of deuteron. That means heavy water, deuterium heavy, and its mass is supposed to be equal to m2. तो इसका यहाँ पे कोलाइजन होने के साथ इसकी जो काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी में से कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी, कितनी काइनेटिक एनर्जी उसकी यूज अप हो जाएगी एट द टाइम ऑफ कोलाइजन। So now initial kinetic energy of neutron, you can write k1i equal to 1/2 m1 v1i square. And collision के बाद वो न्यूट्रॉन आगे जाके यूरेनियम न्यूक्लियस के साथ फिजन करेगा, तब इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन is k1f equal to 1/2 m1 v1f square. But we know for such elastic collision, we have studied that v1f equal to क्या होता था, m1 minus m2 upon m1 plus m2 into v1i. तो this v1f you substitute, तो you will get k1f equal to 1/2 m1 m1 minus m2 upon m1 plus m2 का whole square into v1i square। सेट इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमको तो क्या कैलकुलेट करना है कि न्यूट्रॉन जब ड्यूटेरॉन न्यूक्लियस के साथ कोलाइड होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी लॉस होगी। तो यहाँ पे इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं, न्यूट्रॉन की फाइनल काइनेटिक एनर्जी जानते हैं, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। इसीलिए यहाँ पर ये आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो कम है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो ज्यादा है, उसका रेशियो लेंगे तो आपको मिलेगा फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय न्यूट्रॉन, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय न्यूट्रॉन, that and it is denoted by the symbol F1, and this F1 equal to K1F upon K1I. तो you take the ratio of equation 2 and equation 1. तो इसमें 1/2 m1 1/2 m1 कैंसिल, v1i square कैंसिल, तो आपको क्या मिलेगा, ओनली दिस क्वांटिटी। तो दिस k1f upon k1i इक्वल टू m1 minus m2 upon m1 plus m2 का स्क्वायर, जिसमें m1 क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, एंड m2 क्या है, मास ऑफ ड्यूटेरियम न्यूक्लियस। इट इज इक्वेशन नंबर 3। तो ये हुआ फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय न्यूट्रॉन, और ये फ्रैक्शन को आप 100% से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगी काइनेटिक एनर्जी कितनी लॉस हुई इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में। अब यहाँ पे दूसरी साइड पे ड्यूटेरियम न्यूक्लियस के साथ कोलाइड हुआ, ड्यूटेरियम न्यूक्लियस तो स्टेडी था तो वो भी मोशन में आ जाएगा, इसलिए वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। तो अब आपको मिलेगा, तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा तो उसका भी फ्रैक्शन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसने कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन की और यहाँ पे कितनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के साथ न्यूट्रॉन इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ था, तो उनका रेशियो, तो वो आपको देगा द फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेन बाय मॉडरेटिंग न्यूक्लियाई लाइक ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई इज F2, and F2 is equal to K2F upon K1i, K2F upon K1i. But तो this K2F equal to 1/2 m2 v2f square, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं।
लेकिन इस तरह के कोलाइजन में, परफेक्ट इलास्टिक कोलाइजन में क्या होता है, सम ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय वन एंड the fraction of the kinetic energy gained by the another is equal to 1. That means F1 plus F2 should be equal to 1 होना चाहिए. That means for elastic collision, you can write F1 plus F2 equal to 1. That means F2 is equal to 1 minus F1. तो हम ये इक्वेशन यहाँ पर सिर्फ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज के लिए कैलकुलेट करेंगे, लेकिन डायरेक्टली नाउ वी यूज द F2 is equal to 1 minus F1. Therefore F2 is equal to 1 minus F1 क्या था, m1 minus m2 upon m1 plus m2 का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे m1 plus m2 का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में वो एलसीएम रहेगा, तो ये ऊपर न्यूमरेटर में m1 plus m2 का होल स्क्वायर माइनस m1 minus m2 का होल स्क्वायर अपॉन m1 plus m2 का होल स्क्वायर. इफ यू सिंपलीफाई यू विल गेट f2 is equal to 4m1 m2 upon m1 plus m2 का होल स्क्वायर. इट इज इक्वेशन नंबर 4. Same kind of equation you may also get it by using this equation K2F upon K1I, जिसमें K2F equal to 1/2 m2 V2F square and V2F की इक्वेशन पुट करनी पड़े, बराबर इस तरह से. तो you can obtain this F2 is equal to 1 minus F1 से easily obtain कर सकते हैं. तो these are the two equations of fraction. One is F1, another is F2. तो F1 क्या है, fraction of kinetic energy lost by neutron, and F2 क्या है, fraction of kinetic energy gained by deuteron nucleus जो steady था. F2 is equal to this one. So now we obtain this value F1 and F2. इससे हम कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा, तो सामने ड्यूटेरॉन न्यूक्लियस कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा. तो नाउ फॉर ड्यूटेरॉन न्यूक्लियस H12 होता है, इसलिए उसका मास नियरली डबल देन दैट ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है. तो M2 is equal to twice of M1. Therefore substituting this value M2 की जगह twice M1, तो आपको F1 is equal to, ये जो इक्वेशन था M1 minus M2 upon M1 plus M2 का होल स्क्वायर, तो M1 minus 2M1 upon M1 plus 2M1, तो दिस इज माइनस 1 upon 3 और इसका स्क्वायर आपको क्या मिलेगा 1/9. तो F1 is equal to, you will get 1/9. अब इसको 100% से मल्टीप्लाई करो जो मैंने यहाँ पे लिखा है. तो F1 इक्वल टू क्या था, K1F upon K1I. तो F1 is equal to K1F upon K1I equal to 1/9 multiply by 100%, तो 100 upon 9%, that means 11%. तो 11% क्या, तो अब देखिए यहाँ पे K1F is equal to 11% of K1I. मतलब कि ये जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसकी, न्यूट्रॉन की आफ्टर कोलाइजन नियरली कितनी होगी, 11% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. अब 11% के बदले में 10% करो तो फाइनल का नियरली, जस्ट टू मेक कैलकुलेशन इजी, तो यानी कि K1F विल बी इक्वल टू 10% ऑफ K1I. फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन आफ्टर कोलाइजन कितनी रही, 10%. 10% किस में से, 100% में से 10% रही, मतलब 90% इसने लॉस कर दी. तो वन कैन से दैट द 90% ऑफ न्यूट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी, तो यानी कि न्यूट्रॉन ने अपनी काइनेटिक एनर्जी कितनी 90% लॉस कर दी, और किसने गेन की, ड्यूटेरॉन न्यूक्लियस ने. So 90% of neutrons kinetic energy is transferred to the deuteron nucleus. And यहाँ पे सिर्फ आप F2 गेन कर सकते हैं कि ड्यूटेरॉन न्यूक्लियस ने कितनी गेन की, 90%. न्यूट्रॉन ने कितनी परसेंट लूज की, 90%, एंड ड्यूटेरॉन ने कितनी 90% गेन की. तो अगेन यू कैन कैलकुलेट, वो F2 से लिखो. तो F2 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे अपने पास 1 minus F1, तो 1 minus 1/9 इट इज 8/9. तो 8/9 is equal to 80 multiplied by 100%, तो 800 upon 9 becoming 89%. you can consider equal to what, 90%. लेकिन F2 इक्वल टू क्या है, K2F upon K1I. तो K2F is equal to कितनी होगी, 90% ऑफ K1I. लेकिन K2F किसकी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन जिसने गेन की, जो हमने लिखा था. That's why you can say that the 90% of kinetic energy which have been lost by neutron have been gained by deuteron nucleus. अब अगर यहाँ पे ड्यूटेरॉन के बदले में कार्बन अगर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट में मॉडरेटर की तरह यूज करते हैं, तो कार्बन के लिए क्या होता है, फॉर कार्बन ch-6, इसका मास कितना है 12, यानी कि द मास ऑफ दिस कार्बन इज नियरली 12 times the mass of neutron. 12 times the mass of neutron. So again by using this equation of F1 you can determine the F1 is equal to M1 minus M2 यानी कि 12M1 upon M1 plus M2 यानी 12M1.
तो -11/13 का स्क्वायर 121/169 इक्वल 0.716, यानी उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो 100% से, तो आपको मिलेगा 71.6%। तो F1 इज इक्वल टू कितना 71.6%। लेकिन F1 इक्वल टू क्या होता है K1F अपॉन K1I, यानी कि K1F अपॉन K1I इज इक्वल टू 71.6%। यानी K1F मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज 71.6% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इसको 100 में से माइनस करें तो आपको पता चलेगा कि उसने कितनी एनर्जी लॉस की। तो उसने कितनी एनर्जी, दैट मीन्स व्हाट यू कैन से दैट द 100 माइनस 71.6 तो आपको मिलेगा 28.4%। इट मीन्स व्हाट, द कार्बन न्यूक्लियस इज गेटिंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू 28.4% ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। यानी कि न्यूट्रॉन ने कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस की एट द टाइम ऑफ कोलिजन विद कार्बन 71.6%। तो हियर 71.6% of neutrons energy is going to be transformed to the carbon nucleus, or you can say न्यूट्रॉन अगर कार्बन के साथ कोलाइड होता है तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस करता है 71.6% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट, और वहां पे कार्बन न्यूक्लियस कितनी गेन करता है तो 28.4%। ओके, तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश, एंड देन आई विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 7। आपका होमवर्क है पूरे एक्सरसाइज में जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो सारे न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं इस चैप्टर।